Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dutch disease. In 1970, in the early 18th century, and then in the late 19th century, the world increase in prices of certain traded goods and resources like oil led to stresses for those sectors of the economy whose world prices did not witness any big change. Such situations was given the name of Dutch disease in Europe. Some like situation developed in Norway and UK, where oil reserves were discovered in the northern seas. They led to create problems for those manufacturing sector which are used to sell goods under competitive conditions at the world level. However, the non-trader sectors which provided goods and services to local markets were not affected to a greater degree. Explain. In order to explain the concept, it is assumed that there are so many industries in an economy which are producing goods for world markets, and for each industries labor is obtained from a common pool. The laborers are employed with some other factors like capital, which is specific to that sectors, and the supply of that factor is fixed. Further, it is supposed that out of such export sectors, there is some product whose world price rises. Those labor which are associated with expanding sector of the economy, their payment increase more than increase in prices. In this way, when wages increase, the growth and expansion of those sectors is affected whose world price do not increase. Therefore, if we show the impact of increase in wage on Ricardian model and keep the world prices constant, the trader sector will suffer a lot. Thus, when wages increase due to increase in prices, the profit accrued by the other trading sector or the payment of specific capital and management of the other trading sectors will fall. It is explained with diagram. Diagram. OX output, OY price in traditional export sectors. Q0, Q1, S, S0, S0, S, P, G. Explanations. According to this diagram, we suppose that a traditional export sector has to face a constant export price at the world level while its supply curve is assessed. Their cost of production increase and they reduce their supply as shown by the curves S0, S0 and quantity OQ0. Effects of Dutch disease on non-traded goods. We know that the goods which is neither exported nor imported due to transport cost is given the name of non-traded goods. It has been observed that when any export sector of a country expands, it will have the effect on the wage level. As a result, the cost of production of non-traded sectors increases. They will have an effect on consumptions. Now we can explain a Dutch disease in Urdu. डच डिजीज़ क्या है? 1970 की दहाई की शुरू और फिर 1990 की दहाई के आखिर में दुनिया में कुछ तजारती अशिया और वसाइल
जैसे तेल की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ, इसके नताइज इन शोबाजात में बहुत ज़्यादा अंदरूनी दबाव देखने में आया, जिनकी आलमी कीमतों में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी। यूरोप में इस सूरत हाल को डच डिजीज़ का नाम दिया गया। इसी सूरत हाल से मंसूब किया जाता है कि जब नीदरलैंड में कुदरती गैस के शोबे में तेज़ तरीन तरक्की वाक़या हुई, जब डच माशियत के बाकी रवायती बरामदी खेमे जमूद का शिकार हो गए और इनके यहाँ तरक्की की रफ्तार सुस्त होगी। ऐसे ही हालात नॉर्वे और बरतानिया में भी देखने में आए, जब शुमाली समंदरों में से तेल के ज़खायर दरियाफ़त हुए और इन मसनूआत को तैयार करने वालों शोबों के लिए मसाइल पैदा हुए, जो आलमी तजारत में मकाबलाती हालात के तहत अशिया फ़रोख्त करते थे। ताहम गैर कानूनी शोबाजात जो मकामी मंडी को अशिया व खदमात फराहम करते थे, वो ज़्यादा मुतासर ना हुए। इफ़ेक्ट्स ऑफ डच डिजीज़ ऑन नॉन ट्रेडेड गुड्स, वो शय जो नकल व हमल के अखराजात की वजह से ना ही बरामद और ना ही दरामद हो सके, वो गैर तजारती शय होती है। जब किसी मुल्क में किसी एक शय बरामदी शोबे में तोसी होती है, इसी वजह से उजरतों में इजाफ़ा हो जाता है। नतीजा गैर तजारती अशिया के शोबे के मसारफ में भी इजाफ़ा हो जाता है और इनका सीधा असर सार्फिन पर होगा, और ये भी हो सकता है कि अशिया की पैदावार कम कर दी जाए, क्योंकि इससे इनकी तलब कम हो सकती है। दूसरी तरफ जब कोई बरामदी शोबा वस्त इख्तियार करता है, तो ये माशियत की हकीकी आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होता है और इसी निस्बत दरामद व बरामद बढ़ जाती है और गैर तजारती अशिया की तलब बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काबिल बरामद शय की कीमतें बढ़ती है, तो इस्तबदाली असर की वजह से मुल्की अशिया की तलब में इजाफ़ा हो जाए। चनाचे अगर किसी तजारती शय की कीमत में इजाफ़ा हो जाए या तेल व गैस की नई दरियाफ्तें हो जाएं, तो इसे डच डिसीज़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं।